फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी विच टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर jurisdiction ऑफ द सिविल कोर्ट्स. So section 9 is courts to try all civil suits unless barred. So according to the bare definition of this section, it says that the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature unless expressly or impliedly barred. तो ये definition कहती है कि सिविल कोर्ट्स के पास हर एक सिविल नेचर के सूट को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन है जब तक वो जो सूट है वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बार्ड ना किया गया हो. तो व्हाट इज सिविल नेचर एंड व्हाट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज कॉनोटेशंस. सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज अ सिविल नेचर. as the word nature means what? Nature means character of anything. So here the word nature is used and not the civil proceedings. The word nature is more wider than the term civil proceedings, and civil nature means not exactly the civil, but it has some characteristics of civil. Civil जैसी है कोई थिंग, सिविल जैसी भी अगर कोई थिंग है तो फिर उसको भी, उस सूट को भी हम सिविल नेचर के सूट बोल सकते हैं. तो सिविल नेचर जो टर्म है वो मोर वाइडर है सिविल प्रोसीडिंग्स के, और ये बात एक केस में भी बोली गई थी, राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट केस में. तो अगर हम देखें कि कौन कौन से सूट्स जो हैं वो सिविल नेचर में आते हैं, तो दीज आर like the matters relating to right to property is of civil nature suit, and right to worship और marriage related जो होते हैं for the marriage related cases are civil nature suit, and suits for damages and suits for the breach of contract. All these suits are the example of civil nature suit. But if we talk about what is not covered under the civil nature definition, is that according to the explanation 1 of section 9, it says that the जो भी principal and internal matters of religion, caste, matter concerning purely religious rites and ceremonies are not considered as a civil nature. तो जो मैटर्स, जो केसेस होते हैं जो कि प्योरली, जो कि रिलीजन बेस्ड होते हैं, किसी कास्ट से रिलेटेड होते हैं, और किसी रिलीजियस राइट्स सेरेमनी से रिलेटेड जो भी सूट्स होते हैं वो भी सिविल नेचर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और उनको भी जो सिविल कोर्ट्स हैं वो ट्राई नहीं कर सकते. तो but when all these when community right means matter of religion for whole society, but affects or infringe any individual right of a person. but जब ये rights जो राइट्स जो हैं रिलीजियस रिलेटेड राइट्स इन्फ्रिंज किसी का वॉयलेट करते हैं, किसी इंडिविजुअल का राइट वॉयलेट करते हैं, देन इट बिकम्स द मैटर ऑफ सिविल नेचर, एंड हैंस देन इट कैन बी ट्राइबल एज द सिविल नेचर सूट बाय द सिविल कोर्ट्स. तो ये बात थी सारी की सारी सिविल नेचर की. कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड सिविल नेचर as we discussed above. But now there are another words that are expressly and impliedly barred. So what is expressly barred and what is impliedly barred? So expressly barred are those which are barred in any statute or in the CPC, which are expressly barred. So like section 4, 5, 7, 8 of CPC are expressly barred. They said that section 5 said that the revenue courts, there are specific revenue courts for a revenue matter, and hence they cannot be triable by the civil courts. So these are the expressly bars which have expressly mentioned in any statute or in the CPC itself. And another statutes like the income tax proceedings are not triable by the civil court. There are separate courts for that. Delhi Rent Control Act, consumer forms, these will not cover by the CPC, and hence these types of cases are not dealt by the civil courts. And now if we talk about the impliedly barred, it basically means that suits are not expressly barred by any statutes, but still they are acting as the bar.
We have common perspective that special law overrides general law. CPC is what? CPC is a general law, and whenever there is a special law or any local law, then it will override over the general law like of CPC. So it can be called as the impliedly barred. So, and the second is acts of the state. We can't file any suit against the act of the state. We can file the writ petition, but there is no procedures under the CPC. Or if any political related issue is there, then these type of suits cannot be try under the civil courts. So these are all impliedly barred. So other than these cases, all the civil nature suits are all these civil nature suits are triable by the civil courts according to the definition of section 9. तो अगर हम अब कुछ केसेस कर लें तो इस सेक्शन पे, तो फर्स्ट केस इज डीपी अग्रवाल वर्सेस आरसी अग्रवाल 2003 का केस है ये. तो इसमें एक जनरल डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 9 जो है वो बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने. तो सिविल कोर्ट विल ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. तो ये कॉमन सी डेफिनेशन है जो कि अभी तक हमने डिस्कस की है. और जो सेकंड केस है वो है राम दुलारी सरन वर्सेस योगेश्वर 1969 सुप्रीम कोर्ट. एंड इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इंटरनल मैटर ऑफ अ कास्ट आर टू बी डिसाइडेड बाय द कास्ट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज एंड नॉट बाय द कोर्ट्स. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that caste related issues, religion related issues are not dealt by the civil court.